Hello students, welcome to Educate. Today we will be studying your class 11th NCERT English from your book Snapshots, and the chapter's name is The Address by Margomenko. काफी इमोशनल स्टोरी है बिकॉज काफी ज्यादा इमोशंस इसमें हमें देखने को मिलेंगे. वैल्यूएबल्स कि क्या ऑब्जेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू होल्ड करते हैं फॉर देम बीइंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर उनका कोई डीप मीनिंग और इमोशन भी अटैच्ड होता है. सो दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. Holland माने नेदरलैंड्स. poignant मतलब पेनफुल, बहुत ज्यादा दर्दनाक, इमोशनल, सैड एंड इमोशनली शैटरिंग are some of the synonyms जो कि आप समझ सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and I stood on the step. उन्होंने नॉक किया ऑथर ने. उन्होंने पूछा क्या आप मुझे अभी भी जानते हैं. तो जो वहां उस घर में रह रही थी जहां वो पहले ऑथर रहा करती थी अपनी मदर के साथ बिफोर द वॉर, तो उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला और देखा. एंड आई एम मिसेस एस डॉटर, उन्होंने बोला. द ऑथर सेड. ऑथर और द नैरेटर इन दिस केस, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. वो पहचान नहीं पा रही थी और बस देख रही थी. Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. तो now the narrator says कि हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो, मैं गलत घर में घुस आई हूं, क्योंकि वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एक साइन नहीं दिखा रही थी ऑफ रिकग्निशन. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. जैसे ऑथर को लगा कि शायद वो गलत घर में एंटर कर रही है, गलत जगह पूछ रही है, because she wanted to go back to her place where she grew up with her mother. तो इस वजह से उसे लगा कि शायद वो गलत घर में घुस आई है, क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पे रह रही थी, जो रेजिडेंट थी उस घर में फिलहाल, वो उसे पहचान नहीं रही थी जरा सा भी. That's why the author or the narrator spotted that green cardigan. वो ग्रीन एक स्वेटर टाइप था जो उन्होंने पहना हुआ था, जिसपे वुडन बटन्स थे, और फिर वो तुरंत पहचान गई कि हाँ वो सही जगह पर है. Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back, only me. So एकदम से जो रेजिडेंट है वो कहती है कि मुझे लगा कोई आया नहीं है, मुझे नहीं लगा आप लोगों में से कोई भी वापस आएगा. तो नरेटर कहती है कि हाँ मैं वापस आ गई. नाउ आई एम बैक. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. एक मस्टी सी स्मेल आई, एक काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई. पीछे से एक दरवाजा खुला, घर के अंदर ही नरेटर ने देखा वो बाहर खड़ी हुई थी, और जो रेजिडेंट थी वो थोड़ा अपने आप को छुपा छुपा के हल्का सा दरवाजा खोल करके ही रख रही थी. I regret I cannot do anything for you. I have come here, especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you. Another time. She nodded and cautiously closed the door, as though no one inside the house should be disturbed. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black
letters on white enamel. And on the jamb, a bit higher, the number 46. तो घर वही था, जो रेजिडेंट थी वापस अंदर चली गई. उसने देखा कि नरेटर को बेसिकली ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो रेजिडेंट है वो चाह रही हो कि अंदर कोई ऑलरेडी हो, वो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से उसने दरवाजा बंद कर दिया. फिर एकदम से कर्टन्स खोले और फिर से उस रेजिडेंट ने देखा और उसने फिर देख करके अंदर आवाज लाके बोला, ओ इट वाज नथिंग. नेम प्लेट भी वही थी, घर भी वही था, बस उसने नेम प्लेट को चेंज होता हुआ देखा. व्हाइट एनेमल पे अब नाम लिखा हुआ था मिसेस डॉर्लिंग और नंबर था नंबर 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or the other about the rooms had changed. I missed various things my mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contract since they had come regularly. तो बेसिकली वो जानती थी कि नरेटर की मदर और मिसेस डॉर्लिंग बहुत पुराने दोस्त थे. उसकी मदर ने उनके बारे में बताया था कि वो उनकी एक फ्रेंड थी एंड उसको काफी सारी चीजें याद थी अपने घर के बारे में, वो कमरे याद थे, उसने नोटिस भी किया था, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को बताया भी था और मिसेस डॉर्लिंग ने इग्नोर भी कर दिया. एंड वो काफी पुरानी एक्वेंटेंस थी, पुरानी जानकार थी नरेटर की मदर की, जो काफी सालों से मिली नहीं थी. अब सडनली नरेटर आई और वो कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, फिर वो रेगुलरली उसने जाना शुरू किया. नरेटर स्पेशली ट्रेन लेकर के आई थी उस जगह को देखने के लिए. एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम with her, said my mother. She took all the table silver in one go and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases and I'm worried she got a crick in her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. अफसोस करते उन्होंने अपना सर हिलाया और बोला कि वो लगभग सब कुछ उठा के चली जाती थी, सिल्वर वेयर लेके चली गई, एंटीक प्लेट्स लेके गई और उसने बहुत कोशिश करी लार्ज वेसेस और क्रॉकरी उठाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थी मिसेस डॉर्लिंग जिनके बारे में बात हो रही है, उनकी पीठ पे थोड़ी मोच आ गई हो या फिर एक क्रैक की आवाज आई हो और ये सारी बातें उसे याद थी. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. उसकी मदर ने कहा कि चलो अब हमें जाना पड़ेगा, जो क्योंकि हॉलैंड में उस टाइम पे हालात ऐसे थे, वॉर होने वाली थी. तो नरेटर की मदर कह रही थी कि जिसको जो ले जाना है ले जाने दो, हमारे लिए यहाँ रहना अब सही नहीं है. तो वो रिलोकेट कर गए. So that was the main reason why they left. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risks she's running. Each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. All right. क्योंकि वो सारी चीजें यूजलेस हो रही थी, उनका कोई काम नहीं था, कोई सर पैर नहीं था, तो इस वजह से मिसेस डॉर्लिंग को देना सही लगा नरेटर की मदर को. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly. And after that we spoke no more about it. फिर बाद में उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं करी. जब नरेटर खुद छोटे होती थी और वो छोड़ के चले गए, पुरानी बातों को वो रिकॉल कर रही है नरेटर. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of
memories from a precious time. वो सीधा वापस चली गई, वापस ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, उसको अपने पुराने घर की भी याद आ रही थी, and she was disappointed that Mrs. Darling did not recognize her at all. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had first time met her. It was in the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. फिर वो वापस जाती हुई देखती कि उसकी मदर से मिलने कोई लेडी आई है और उसने दोबारा मिसेस डॉर्लिंग को देखा. नरेटर की बात हो रही है. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with a heavy case. In Macaroni Street, said my mother. Number 46, remember that. तो जब मिसेस डॉर्लिंग को उसकी मदर सारा सामान दे रही थी तो ये सारी बातें हुई थी. बहुत पुरानी बात है, नरेटर रिकॉल कर रही है. एंड नंबर 46 वो नरेटर को आज तक याद था. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, जब war खत्म हो गई, I was absolutely not interested in all that stuff, all that store stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. Okay, ये बहुत important part है. इससे related questions आ सकते हैं. It's not just about objects, it's about the sentiments attached to it. वो किसको belong करता था, उससे related सारी memories वापस refresh हो रही थी, and it wasn't a pleasant memory to leave their home. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view that were more used to at glancing each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address. I wanted to see them, touch and remember. Again, about memories, not about the objects, so related sentiments. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door for me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother's doing an errand. घर का काम कर रही हैं वो. No matter, I said, I'll wait for her. नरेटर फिर वापस जाती है और इस बार एक 15 साल की बच्ची दरवाजा खोलती है. वो कहती है, कोई बात नहीं, आपकी मम्मी काम कर रही हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगी. It's not that big of a problem. Okay, I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. एक Jewish candle होती है, Hanukkah candle, जो कि कुछ ऐसी दिखती है. ऐसी दिखने वाली कैंडल होती है जिसे मेनोरा बोलते हैं, और ये हानुका एक जूइश फेस्टिवल होता है, उसमें यूज करी जाती है. So therefore, won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and I did not know. I was in a room I knew and did not know, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती हैं. बहुत समय से वो वहां नहीं गई थी, बट एक टाइम पे वहां रहा करती थी, तो उससे रिलेटेड मेमोरीज वैसे भी फ्रेश हैं. So it's a very deep connection, a very deep line. I found myself in the midst of things that I didn't want to see again, but which oppressed me in strange atmosphere. Because अब नरेटर की मदर भी नहीं है, वो अपनी मदर को भी याद कर रही है. उसकी मदर ने बोला था वो जा करके देखे, and वो वहां एक टाइम पे रहा करती थी. So it's a very emotional connection. Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know. But I scarcely dared to look around me. Ugly furniture
मतलब एक ऐसा रिपल्सिव फर्नीचर जो उसे अब फील हो रहा था. The girl moved a chair. I sat down and I stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a mark, a burn mark that had never been repaired. एक टेबल क्लॉथ था जिससे उसे याद आया कि इसमें एक बर्न मार्क था जो कभी रिपेयर नहीं हुआ. My mother will be back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have a cup? कहती है उसकी मम्मी जल्दी आने वाली हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठना चाहें और चाय पीना चाहें तो पी सकती हैं. Thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad bag just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. अब सब कुछ different था, उसे बहुत strange लग रहा था नरेटर को, बिकॉज वो अब फाइनली अपने घर में ही अपनी चीजें बहुत पुरानी जिसको वो इंड्योर कर चुकी है, क्योंकि उसे ये तक याद था कि एक पुराना टेबल क्लॉथ है, वही टेबल क्लॉथ है, उसके जैसे दिखने वाला कोई दूसरा नहीं है क्योंकि इसमें बर्न मार्क भी है. सो oh, you know about them? She had turned around and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antique and we've got lots more. She pointed around the room. See for yourself. उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारी पुरानी चीजें एंटीक्स हैं, आप अपने आप देख सकते हैं. I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. जो एप्पल रखा होता था टेबल के बीच में pewter plate पे, वो उसे वंडर करती थी. उसे बचपन की यादें ताजा हो गई कि वो बचपन में भी कैसे उसे घूरा करती थी, और आज भी वो वही कर रही है, घूर रही है, बट एज अ स्ट्रेंजर इन समवन एल्सेस हाउस. एक टाइम पे वो उसी का घर था, but due to the war and many other circumstances, they left. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted so much, but it wasn't anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said. You get used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it for free or lent it for example. फिर जाकर के आपको उसकी वैल्यू होती है. 15 साल की बच्ची उसको ये बातें बता रही थी कि हाँ ऐसा होता है, हमारे पास बहुत एंटीक चीजें हैं और हमें इनकी वैल्यू अब शायद पता भी नहीं. Again I heard the natural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a very long time and I was probably bored at the time, or perhaps I had to stay home because I was ill, as she had never asked me before. I had asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives, of course. And that was a strange thing. I did not know the cutlery we ate off every day was silver. तो अब उसे याद आता है कि वो चांदी के बर्तनों में खाती थी बचपन में, उसे उसकी वैल्यू नहीं पता थी. उसकी मदर उसे कहती थी कि कभी कभी वो उसकी जो नरेटर है अपनी मदर की हेल्प करे उसे क्लीन करने में, तब उसे वैल्यू नहीं थी इस चीज की. सो दैट्स व्हाट द ऑथर टॉक्स अबाउट, कि उसे शायद याद भी नहीं कि वो उस टाइम पे वैल्यू भी नहीं पता थी कि वो चांदी के बर्तनों में खाती थी. द गर्ल laughed again. I bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I looked. It's in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. As I walked the passage, I heard the jingling of spoons and forks. Finally, author के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था. वो जाना चाहती थी, बहुत इमोशनल हो रही थी. At the corner of the road, I looked up the nameplate. Marconi Street, it said. It had been number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects there that are linked
in your own memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. And what should I have done with them? In a small rented room where the shreds of a blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. अब वो भूल जाना चाहती थी और उनमें से वो चाहती थी कि वो सबसे ज्यादा एक आसान चीज रहे भूल पाने के लिए. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clue about the story? If yes, what is it? Have you come back? सीधा जो रेजिडेंट थी वो इसलिए पूछती है, इसका सीधा मतलब है कि वो कोई ना कोई एक रिटर्न एंटिसिपेट कर रही थी, वरना वो क्यों बोलेगी कि क्या आप आ गए. मतलब वो पता था उसे कि कोई ना कोई वापस आएगा. I thought that no one had come back. मुझे नहीं लग रहा था कोई वापस आएगा. Obviously पता चलता है कि किसी ना किसी ने उस घर में वापस आना था, एंड द ऑथर उसको पता लग जाना चाहिए था कि हाँ ऑफ कोर्स उसे पता भी था कि वही घर है, बट इंडिकेशन क्लियर हो जानी चाहिए थी. Does this statement some clue about the story? If yes, what is it? एक क्लू ये मिलता है कि the lady herself knows, उसे पता है, उसको डर है, फियर है कि कहीं जो आई है वापस वो उसको पहचानती भी थी, सब जानती थी, उसे पता था. एंड शी वाज फियरफुल कि जो उसके पास करंटली ये सारे सिल्वरवेयर और एंटीक चीजें हैं ये चली ना जाए. The story is divided into pre-war and post-war times. What hardships do you think the girl underwent during these times? World War II की बात है. Most probably अगर हम हानुका कैंडल्स की बात करें तो वो यहूदी थे, ज्यूज थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ज्यूज को हॉलैंड फ्री करना पड़ा था, क्योंकि हॉलैंड यानी कि नेदरलैंड्स जर्मनी का एक पार्ट था उस टाइम पे, नाजी जर्मनी का, और उन्हें वहां से निकाला गया था और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया था. इस वजह से अपनी सारी बिलोंगिंग्स छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा था कहीं और. Why did the narrator of the story want to forget the address? क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था ये देखना कि एक समय पे जो चीजें उसके पास थी, उसके पोजेशन में थी, वो अब किसी और के पास है. It was very painful, along with the memory of her own mother coming again and again into her brain. That was a very difficult thing to look at. The address is a story of a human predicament that follows war. Comment. बिल्कुल, because during the war there are many different things that people have to do and go through, but after the war is over, nothing else is left but sorrow, harsh memories, grief, etc. and there's nothing that we can do about it. तो ये था आपका chapter, the address of your NCERT class 11th English. I hope you understood the chapter until now. Very easy chapter, plain details. तभी इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कम हैं अगर आप देखें. So I hope you enjoy this chapter. ऑथर का नाम जरूर याद रखें क्योंकि कभी कभार एक आधा मार्क का क्वेश्चन आ जाता है उस पे. Why lose unnecessary marks? Because English में already marks बहुत ज्यादा कटते हैं. It's a very subjective topic. So I hope you understood the chapter, and make sure you like, share, comment and subscribe to this channel. And thank you, Team Educate.